इसको एक नाम दे दिया SARS-2, CoV SARS-2, जबकि हम इसको आम भाषा में क्या कहते हैं, कोविड। कोविड इज नथिंग बट कोरोना वायरस डिजीज। पूरा नाम क्या है, CoV SARS-2। तभी आप जितनी भी आप मेडिसिन जो वैक्सीनेशन देख रहे हो उसमें CoV लिखा हुआ है, उसमें कोविड तो लिखा ही नहीं हुआ। कोविशील्ड एंड ऑल दैट, वो क्या है बेसिकली, वो उसी वजह से है। और CDC क्या वो किसी भी कंट्री की क्यों ना हो, इंडिया की, अमेरिका, हर जगह में CDC प्रिवेल करती है। कुछ कंट्रीज ने इसकी बात मानी, कुछ ने नहीं, ठीक है। बाद में ये पैंडेमिक में कन्वर्ट हो गया। पैंडेमिक लिटरली फ्रॉम टू वर्ड्स, पैन मीन ऑल एंड डेमोस मीन पेपर। एक IC इज एन एडजेक्टिव सफिक्स। तो जब इनसे नहीं कंट्रोल हुआ तो हम कहते हैं ग्लोबली ये फैल गया। ग्लोबली वर्ड भी बना किससे है, ग्लोबल प्लस एल से। ग्लोबल का मतलब होता है पूरी वर्ल्ड। तो आजकल क्या चल रहा है, आजकल इसके लिए वैक्सीन आ रही हैं, लेकिन दोस वैक्सीन्स आर 81% इफेक्टिव एज पर द न्यूज़। recent one 81% इफेक्टिव है, 19% they are not tested. Every country tried to claim that they have made an effective medicine, but actually not. More or less like it was for trade देखा गया था। अब जिस चीज की एफिशिएंसी ही 81% है, तो उस केस में आप खुद इमेजिन कर लीजिए कि हमारे जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस एंड ऑल दैट हैं वो खुद क्यों नहीं लगवा रहे। देयर आर ट्रायल्स, जब भी कोई वैक्सीन बनती है तो उसके 3 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। तो इंडिया में भी कहने को ट्रायल्स हुए हैं, लेकिन लिटरली जो सैंपलिंग स्पेस है वो ज्यादा नहीं ली गई। उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने। अभी फिर से एक थर्ड वेरिएशन आ गया, कोरोना का नया स्ट्रेन आया, हम कहते हैं स्ट्रेन आ रहा है, ब्रिटेन से शुरू हुआ। वो क्या है, वो SARS-3 की नई वेरिएशन है। कोरोना एक वायरस जो है वो अपना वो बदलता है, क्या बोलता है, रूप बदलता है हमेशा। तो वो चेंज हो रहा है, वो नया स्ट्रेन आ रहा है। सो अब हमें क्या करना होगा, वी हैव टू टेक प्रोटेक्शन, बट प्रोटेक्शन व्हाट? Whenever you are going to public place, ensure that you wear a mask. Yes. It's not required at your home, as we know that mask actually is thin. आप लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले रहे हैं और वो बीमारियों का घर और है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को और खराब करता है। So there was a one study in Kerala. There was so much virus, right? In the starting, and that will continue about 6 months. They control that virus just because of one thing. They use the mask outside their house, and in their house also. Because of that, they able to control the. Kerala they are 99% literate people. Yes, sir. And they are rule obeying people. Yes, sir. So that is why they were able to control. As compared to Punjabis or any other place, we don't follow rules. Rules are not meant for us. हमारे लिए नहीं बने हो। So then why Kerala is the most affected state? Because international tourism जो है वो केरला में सबसे Yes, ज़्यादा है। The South Indian people, so only after studying they go abroad and they work over there. Moreover, international मतलब केरला में because the place you can say scenic beauty and all that, internationally बहुत tourists are. Sir, actually Kerala is the means Kerala, not I'm talking about the particularly Kerala, and I'm talking about the whole South India. Yeah. They are very intelligent people here, and there is also a saying, they are the true Indians. Yes. We are not the true Indians, they are the true Indians. And actually more or less like it was government hype कि उस स्टेट को बदनाम कर दिया जाए ताकि हम अपने जो ड्रॉबैक्स हैं उसको छुपा सकें। So till now there are so many Brahmins in South India, but BJP never came That's what in power. It's more or less like politics. So here we are not going to discuss politics. That is not a politics. I was studying still that. they follow
rituals. They Yes. still follow rules and regulations, which most of Indians they don't. Actually, they only follow. They are literate people, and they just want what they want. They know what they want. That's why, according to that, they select the government. Yeah. Not blind, like someone give you a money and you're just going and casting your vote. Exactly. Exactly. Yeah. So coming back to the topic, that is COV only. I'm going to culminate off. I'm going to end it off. So the root cause, sorry, final thing is that the moral of the story is that ensure that you drink hot water at all times, no cold water. Stick to the vegetables as much as possible. Avoid junk food to the maximum. Prefer to heal your body naturally. And to maximum extent, add a spice of ginger to your daily diet. Ginger, basil मतलब तुलसी, ठीक है? Ginger, basil, cumin, and lemon. If possible, and if you like, you can add a dash of honey also. Stick to liquid things maximum. I will assure you, in fact, as per the Ayurveda, this is the best thing for curing yourself and to stay away from diseases. Nowadays, as you know, that I'm reading one book called The Hot Belly Diet by a doctor called Kshirssagar. So in that, they actually prescribe the thing how to stay away from medicines forever and how to follow a strict diet that will actually help you in ensuring a good immune system. If ever you get time, you can read that book, The Hot Belly Diet. Okay, with this, I end up my lecture. If you have any queries, you one can. question. Yeah, please. So as you said that it is a ring which like it is a crown Yeah, which born when there is solar eclipse. yeah, exactly. Any of it. So yes sir. Yeah. So what we consider the main cause? The main cause is like the ring is visible for you can say couple of seconds only, few seconds. So it's basically like a crown. So corona looks like a crown. That is why in during this pandemic. So yes sir. So my question is then what is the main cause Of what? of the virus? The main cause of virus is viruses, sir. From the virus, actually, as I told you, that it comes from a family of viruses called Coronaviridae. So that is the root cause. Okay. It's a basically a virus only, and like every virus, it fights. Yes, this virus was not controlled. Yes. Otherwise, then a body suffers from some disease. Fine, it is controllable, but the use of antibiotics, I think it's not acceptable. हम लोग जब फ्लू होता है फीवर होता है हमें डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देता है वो जब हाई वायरस है तो वायरस के ऊपर बायोटिक्स एंटीबायोटिक्स कैसे काम करेंगे Sir, actually, there are so many ways to develop a vaccine. Yeah. RNA, mRNA. Yeah, there are Yeah. messenger RNA also. Yeah. They develop that through mRNA, Yeah. mRNA, Yeah. and they use a dead cell of that virus and create the vaccine. जैसे कहते हैं ना कि सांप की जो एंटीडोट होता है वो बेसिकली सांप के जहर नहीं होता है Yes. उसी से दवाइयां बनती हैं तो हर एक चीज का जो तोड़ होता है जो कोई भी मेडिसिन बनती है वो एक्चुअली उसी चीज से ही कुछ निकाल के होती है क्यों वेरी कैसे करता है ठीक है थैंक यू सो मच एनी डाउट्स विल बी आंसर्ड प्रॉम्प्टली